Assalamu alaikum, मैं हूं आमना. You are watching something hot and this is a solo outing of Beyond Borders. हंस मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे आदत बिल्कुल नहीं है बगैर हसन के कोई भी बात करने की something hot पे. और हसन है नहीं, जैसे कि आप जानते हैं वो जेलम गए हुए हैं for a family wedding. I hope he's having a good time. लेकिन हमने ये सोचा कि बहुत गैप ना आ जाए, कुछ ना कुछ आप लोगों को देते रहें कंटेंट, ताकि आप लोगों की भी रिक्वेस्ट जो है वो आ रही थी for Beyond Borders. तो मैंने क्या कुछ देखा पिछले 2-3 दिनों में, I'll be talking about that. Of course, सर फहरिस्त होगा पठान का टीज़र जो कि 2 नवंबर को रिलीज़ हुआ और वो ट्रेंड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से. उसके बारे में मेरे क्या ख्याल हैं, हसन ने अपने भी ख्यालात भिजवाए हैं, थोड़ा सा उनकी फीडबैक है मेरे पास. इसके अलावा मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी एक सीरीज़ कॉल्ड फ्रॉम स्क्रैच and I'll be talking about that. And whoever's been watching House of Dragon, मैं रिकैप नहीं करूंगी, उसकी डिटेल्ड रिव्यू तो नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत हम हाउस ऑफ ड्रैगन की भी बात करेंगे. तो जी सबसे पहले 2 नवंबर जो कि शाहरुख खान की बर्थडे होती है, उस पे रिलीज हुआ आने वाली फिल्म पठान का टीजर. पठान जो है वो उनकी 4 साल बाद we'll be seeing him in a major role on the big screen. It's a big film. It also stars Deepika Padukone and John Abraham. और अब हमें पता चला है कि इसमें सलमान खान का भी कैमियो है. फिल्म रिलीज हो रही है 25 जनवरी को. It's a 2023 film and of course उसकी बहुत हाइप है. टीजर जो था उसके बारे में मुझे क्या लगा मैं अभी आपको बताती हूँ. So the film has been written and directed by Siddharth Anand, whose last film we saw pre-COVID times War, which was starring Hrithik Roshan and Tiger Shroff. एक्शन फिल्म थी, एक्शन थ्रिलर स्पाई जॉनर था. पठान भी कुछ ऐसा ही लग रहा है. उससे पहले इंटरेस्टिंगली सिद्धार्थ जो थे एज अ डायरेक्टर, ही डन अ लॉट ऑफ रोम कॉम फिल्म्स लाइक सलाम नमस्ते, बचना है हसीनो. तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल एक शिफ्ट किया और ये एक्शन थ्रिलर स्लिक किस्म की डायरेक्ट करनी शुरू कर दी. वॉर ऑफ कोर्स वाज अ मेगा सक्सेस, ब्लॉकबस्टर हिट थी और उम्मीद यही रखी जा रही है कि जो पठान है वो भी ऐसी ही होगी. So छोटा सा टीजर रिलीज हुआ 2 नवंबर को, which is शाहरुख खान's birthday. He turned 57 and the thing to notice of course in the teaser was how fit he looks. And सिद्धार्थ आनंद ने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि शाहरुख खान has never worked so hard to fit into a certain image as he has for this film. तो सबसे पहली बात तो ये कि हम जितने SRK के फैंस हैं हम बड़े खुश होते हैं उनको बड़ी स्क्रीन पे देख के. He looks great. और जो पहला उनका डायलॉग है टीजर में जब वो कहते हैं पठान जिंदा मर गया है या, एंड ही सेज जिंदा है, दैट्स लाइक ओके, शाहरुख खान इज बैक. अब इफ वी गो बैक a couple of years with शाहरुख खान films, they haven't been really successful. कैमियोज उन्होंने किए हैं पिछले साल, उससे पहले भी, मगर 4 साल पहले उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी which was Zero, in which he played a dwarf. Did we enjoy that? Not really. Usse pehle we saw him in Fan, which was of course a double role and kind of a like his own history coming into play. Again, a very avant-garde film, not the quintessential romantic Shahrukh Khan film. Did we love it? Not really. फिल्म जो नहीं कामयाब हुई थी वो थी जब हैरी मेट सेजल बीच में जो उनकी आई थी अनुष्का शर्मा के साथ. I personally loved it because this is how we want to see Shahrukh Khan. We want to see him as a romantic hero. We want to see him romancing somebody in a good locale, you know, outdoor location, foreign location, great wardrobe, great, aesthetic, all of that. But अब शाहरुख खान ना बड़े को experimental mode में चले गए हैं. Of course, with red chilies and at the age he's in, he's constantly reinventing himself. और ये जो experimentation है ना, ये हमें पठान में भी नजर आ रही है. He's playing a character called Feroz Pathaan, and genre obviously spy thriller action है, action heavy है, बहुत VFX effects हैं, बहुत stunts हैं, etc etc. स्टोरी का भी हम नहीं बता सकते कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, बट फीडबैक बहुत आ रहा है. तो हसन का पैगाम ये था कि भाई रेड चिलीज वालों, तुम लोगों की VFX को क्या हुआ? मैंने नहीं नोटिस किया, आपको मैं सच्ची बात बताऊं. आई वॉज जस्ट हैप्पी टू सी शाहरुख खान बैक ऑन द स्क्रीन in very slick action, looking really good. But Hassan was like, no, the VFX were so bad. And you could tell कि कहाँ digitize हुई हुई है film. इतना नहीं होना चाहिए. And then he said, of course, हमने मौला जेट भी देखी है अभी, उसमें आपको पता नहीं चलता कि VFX कहाँ हुए हैं. And the whole way that the title track comes in the end with the Stone Age and all of that, it was a bit passé, he felt, not me.
But what did I love about it? A, primarily Shahrukh Khan. B, primarily Deepika Padukone, who looks absolutely fantastic. And of course, he कह सकते हैं कि जी Deepika Padukone will be in a very glamorous kind of, role as she'll be objectified. We don't know. We can't say that right now. Will she or will she not be? She looks fantastic. And John Abraham also looks really good. So let's see how it is. Promising lag rahi hai. Lag aisa raha hai कि it'll have a big opening because it's been trending. People love the teaser. Other than the few critics who say that, the action is a bit off. एक बात ज़रूर है कि पठान का टीजर देख के आपको वाइब ज़रूर आती है. A little bit of Dhoom, a little bit of Dawn 3 with his styling. वो है. ऐसा नहीं है कि आप कहें कि oh my god, this is like something completely new. It doesn't seem that way. But then it's Shahrukh Khan. And we're willing to forgive a lot. A lot of things can be forgiven to Shahrukh Khan. Again, his 57th birthday, 2nd November, को teaser launch हुआ और 25th January को film आएगी. So personally, we would look out for it. And I'm sure that it's going to have a big opening, even if it's not going to cross like the 150 crore mark or the 100 crore mark. Although, जो पंडित्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी करेगी. आप लोगों का क्या ख्याल है? Did you like the teaser? Did you not like the teaser? Do you think it'll do well? Do you have faith in Siddharth Anand as a writer-director? Of course, it's been produced by Ditya Chopra under the YRF banner. So it's a big film. It's a blockbuster potential है, absolutely. होगी कि नहीं होगी? शाहरुख खान की पिछली कुछ फिल्में नहीं चली बॉक्स ऑफिस पे, जहाँ पे उनका बहुत एक्सपेरिमेंटल चला गया था, मगर यहाँ वो कुछ थोड़े से मोड में लग रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऑफ द ग्रिड चले गए हैं. So let's see. So guys, when we talk about action and we talk about VFX and special effects and fiction fantasy, Game of Thrones loyalists हैं हम लोग. अब इतने seasons हमने enjoy किए obsessively. और जब House of the Dragon आ रहा था तो I was one person really looking forward to it. देखा भी. I personally really enjoyed it. For me, fiction fantasy, Game of Thrones was all about the White Walkers and the dragons. And my God, those dragon scenes were fantastic. I felt I didn't get enough of the dragons. मैंने ट्वीट भी किया था कि हाउस ऑफ ड्रैगन के ड्रैगन्स थोड़े से ढीले हैं यार, मुझे नहीं अच्छे लगते वो जो ब्लड वर्म है और ये सारे ना. But somebody pointed out rightly that they all have a different character, which they do, and they've been characterized around their riders, which is of course very very observant and a genuine comment. But वो जो Game of Thrones वाला grandeur था ना dragons का, वो मैं अभी तक वो महसूस नहीं कर पाई. However, super success था ये season 1 और Daemon Targaryen was my favorite character. But Sarah, it was bloody, it was a lot of fiction, a lot of fantasy, a lot to look forward to, dragons, flights, all of that. तो season 2 renew हो चुका है. आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा House of Dragon? ज़रूर बताएं, give us feedback. हसन ने अभी तक नहीं देखा, तो मैं उम्मीद रखूंगी कि आने वाले दिनों में हसन भी देख लेंगे ताकि हम उसको भी थोड़ा सा उसके बारे में बात कर सकें. The third series that I watched last week was a series called From Scratch. It's on Netflix and it stars Zoe Saldana as Amy Amalche Wheeler and Eugenio Mastrandria, I'm sure I'm mispronouncing the name, as Lino. ये दो main characters हैं और इनकी एक किस्म की love story है. It's a love story that it starts in Florence and brings us to Los Angeles and takes us to Sicily. So, it's aesthetically very pleasing. She's an art student. He's a chef. So there's a lot of food imagery and a lot of art and a lot of beautiful architecture and beautiful landscapes. तो पहले जो 5-6 किस्से हैं ना, they're very feel good. It's about romance and their love affair. किस तरह शुरू होता है, किस तरह आगे चलता है, ups and downs and losses and disappointments and insecurities in their married life. I won't give you any spoilers, but it's a very wholesome love story. And performances are fantastic. It really, really drives you and brings you into the story. Heartbreak भी है, बहुत ज़्यादा. Especially आखिरी 3 किस्तों में तो मैं तो टिश्यू का डब्बा रो रो के मेरा हशर हो गया था. Because it was a real tearjerker. But आखिर में आके आपको थोड़ी सी elevation मिलती है, थोड़ी relief मिलती है. Which is the good thing about good storytelling. कि जहाँ वो आपको रुलाते हैं, वहाँ वो आपको relief भी देते हैं कि रो लो, लेकिन रोने के बाद थोड़ी सी आपको हंसी भी, थोड़ी खुशी
Kabhi khushi, kabhi gum, thoda thoda. So interestingly, From Scratch is a true story, and it's been written by, and I'm just going to read their names, Attica and Tembi Locke. Tembi Locke की अपनी story है, and she wrote this book which was called From Scratch, a memoir of love, Sicily, and family home and finding home. So ये उनकी अपनी कहानी है. So of course it comes with a lot of personal experience, a lot of feeling, and it's just so beautifully told. And it is about romance between, this man and this woman. It is about their marriage. It is about their child and their ups and downs in marriage. But it's also about sisterhood. जो इसकी अपनी बहन के साथ एक relationship होती है. और it's about family values and family ties and how family can get you through the worst of times. So मेरे लिए ये सब कुछ बहुत engaging था. It really riveted me to see how family builds your strength. कि हालात जितने भी बुरे हो जाएं, but if you have people standing around you, if you have sisters and brothers and parents and friends, they help you through really, really tough times. And we see that. We see that in life. So it's a limited edition series. It's on Netflix right now. And of course, it gets very, very depressing in one or two episodes. And you do feel like your heart is being ripped apart. But then it's very real. It gives you a bit of solace at the end. It shows recovery from hurt. So you feel that catharsis as well, जो कि बहुत ज़रूरी है. और हमारे ड्रामों की जब हम बात करते हैं तो ये जो बिट्रेयल और ट्रेजिडी और लॉस है वो 26 किस्तों में होता है और आखिरी 27वीं किस्त के 5 मिनट में आपको कहते हैं कि जी अब आप रिकवर कर जाएं. वो हम नहीं कर पाते. यहाँ पे ये कि 2-3 किस्तें उन्होंने बहुत बहुत डिप्रेशन दिया, मगर फिर आखिरी 2 किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता वो आप एलिवेट करते हैं and you get out of it. So it's a beautifully told story and one I would highly recommend. और मैंने क्या किया जी इस हफ्ते, मैंने इस वीकेंड पे देखी दोबारा द लेजेंड ऑफ मौला जट. और ऑफ कोर्स मैं अपनी कॉन्वर्सेशन एग्जॉस्ट कर चुकी हूँ कि मौला जट पे मैं और क्या बोल सकती हूँ. बट मैन व्हाट अ फिल्म. इट्स क्रॉस्ड 150-60 करोड़ इन 3 वीक्स. मुझे लगता है 200 करोड़ भी क्रॉस करेगी. हाउसफुल था रात को. वी वेंट एट अ 9:30 शो एट न्यूप्लेक्स इन कराची. इट वाज हाउसफुल. एंड ये कराची की ऑडियंस थी जो कि पंजाबी नहीं बोलती. और बहुत से लोग अंदर आते हुए कह भी रहे थे कि आई होप सबटाइटल्स हों, हमें पंजाबी समझ नहीं आती, हम एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे. देयर वाज अ बिग डाउट looming over everybody. But once it started and in the interval, everybody was like, whoa, man, what just hit us? Everybody understood. Subtitles bhi the, but there was a universal kind of a language of Maula Jat that kisi pe was not lost on anybody. But yeah, the performances, I would just want to say that these two actors, I mean, Hamza Ali Abbasi and Fawad Khan, mega actors. और मेरा नहीं ख्याल आप ये कह सकते हैं कि जी नूरी ज़्यादा इफेक्टिव था या मौला ज़्यादा इफेक्टिव था. दोनों के कैरेक्टर्स बिल्कुल फ़र्क थे और ये टक्कर के थे दोनों. You wouldn't have one without the other. And somebody said this very nicely that, they have a love-hate relationship. नूरी भी जो है वो है, he's your antagonist. But he, at the end of the day, has a sense of honor and he is ultimately a feminist, which is so true. And there's very strong feminism in Maula Jat as well. जितनी भी female characters हैं, of course, हम ये सब बातें कर चुके हैं हसन के साथ, but I'm just reliving it a little bit because मैंने कल रात दोबारा देखी and wow, what a film. If you haven't watched it, go ahead, spend that 1200 rupees, जी 1200 रुपए का टिकट है, ज़रूर खर्च करें, ज़रूर देखें. Not to support Pakistani cinema because Maula Jat is beyond that. I feel अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी फिल्म है जिसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि जी सपोर्ट करें. वो फिल्म वाकई इतनी अच्छी है कि आपको देखनी चाहिए. जहाँ से वो शुरू होती है with बाबर अली and रेशम और जहाँ पे वो ख़त्म होती है with the iconic Maula Jat dialogue. It's just a roller coaster ride that you shouldn't miss. If you're looking for family drama, look into From Scratch on Netflix. Beautiful story, gentle, love, romance, loss, hurt, but solace after all of that. Beautifully told. Must watch. Will we watch Pathaan or not? Do you think that it's going to be a propaganda film? I don't know. I hope not. It's certainly going to be a film that everybody will watch. This is Shahrukh Khan after 4 years. And after Zero, back with Pathaan, as Feroz Pathaan, in a big role, in a big YRF film. Blockbuster potential. क्या आप देखेंगे? Do you think? What do you predict for it? Do drop your comment.
And apologies for this rant. It sounds like a rant without Hassan. But मैंने कहा कुछ मैं कर लूँ और ताकि हसन ये ना कहे मैं गया आपने कुछ नहीं किया. So this was my little Beyond Borders. Of course, I miss Hassan, and the discussion would have been much more invigorating and exciting had he been here. But until he's not here, it's me, and I'll be waiting for your comments. Thank you.